Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video I'm going to discuss about the Hadoop basically and the difference between Hadoop and Spark. And first I'm going to tell you about some misconception which we have, like which people generally have about Hadoop. So going to talk about them. So first I'm writing here misconception. Okay. So in this I will write. So first misconception is Hadoop is a database. Hadoop is a database, but it is actually not a database. Instead, it's a framework. It is a framework. Instead, it is a framework. Okay. And also Spark is because we use query from the Hive Matter store and the query is like SQL query. So we have assumed that Hadoop is a database, but actually it is not a database. It is a framework basically. Okay. And then the second point is let me just start with this. Let me just start with this. Second point is Spark is 100 times faster than Hadoop. Spark is 100 times faster than Hadoop. This is not true that Spark is 100 times faster than Hadoop. That is not true always. Okay. And the third point is Spark process data in RAM, but Hadoop don't. Spark process data in RAM, but Hadoop don't. Hadoop database है Spark जो है वो 100 टाइम फास्टर है Hadoop से. ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है. Hadoop भी फास्ट है. Spark जो है डेटा रैम में प्रोसेस करता है पर Hadoop नहीं करता. बट ऐसा नहीं है, Hadoop भी करता है रैम में डेटा प्रोसेस. सो ये तीनों मिसकंसेप्शन थी अबाउट Spark. Hadoop तो मैंने बता दिया. Now I'm going to tell you about the difference between Hadoop and Spark on the basis of some parameters. Okay, so let me just pick up my pen first. So now here I will write the difference between Hadoop and Spark. So the first point is performance. फर्स्ट पॉइंट में क्या है, Hadoop जो है वो स्लोअर होता है Spark से. ये बात तो सच है, ठीक है. बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही Spark फास्टर होता है और Hadoop स्लोअर होता है, जो मैंने आपको मिसकंसेप्शन में बताया था. बट वैसे इन जनरल Hadoop इज स्लोअर देन Spark. Okay, because it writes the data back to the disk again and read again from disk to in memory, because it writes the data back to the disk and read again from the disk. कि दोबारा डेटा डिस्क पे लिखता है, रीड अगेन फ्रॉम द डिस्क एंड रीड अगेन फ्रॉम द डिस्क. ठीक है. एंड स्पार्क में है कि स्पार्क इज फास्टर देन Hadoop. स्पार्क इज फास्टर देन Hadoop
बिकॉज स्पार्क डू ऑल द कंप्यूटेशन इन मेमोरी, ठीक है, बिकॉज स्पार्क सारा कंप्यूटेशन मेमोरी में कर लेता है, बिकॉज स्पार्क डू ऑल द कंप्यूटेशन इन मेमोरी, बिकॉज स्पार्क डू ऑल द कंप्यूटेशन because Spark do all the computation in memory. जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि Hadoop is slower than Spark because it writes the data back to disk and read again from the disk. Spark is faster than Hadoop because Spark does all the computation in memory. Okay, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ आगे। Just go to another page again. जैसे कि हडूप का सिस्टम का बता रही हूँ। पहले जैसे हमारे पास ये सपोज करो डिस्क पे डेटा था, ठीक है ना, डिस्क पे था मेरा डेटा, HDFS में था ना। ये पहले तो मेरा ये स्पार्क में मेरी ये मैपर्स होते हैं, उनके पास जाता है, ठीक है। मैपर्स के पास गया, डिस्क से देन इट राइट द डेटा बैक इनटू डिस्क, मैंने पॉइंट में बताया था, एंड देन रीड द डेटा अगेन। तो उसके बाद फिर से डिस्क में जाता है हडूप में, ठीक है। इस तरीके से हडूप में ना डेटा फिर से डिस्क में जाता है, उसके बाद फिर से मैपर्स के पास जाता है, ठीक है। इट गो अगेन बैक्स टू द मैपर्स, ठीक है। फिर से मैपर के पास गया, उसके बाद ये फाइनली फिर से डिस्क पे जाता है। मतलब ऐसे और भी डिस्क पे जा सकता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गई मेरी, जैसे ये यहाँ ये वाला जो प्रोसेस है, तो ये मेरी फर्स्ट आइट्रेशन हो गई, तो ये हो गई मेरी आइट्रेशन 1, ठीक है। और ये हो गई है मेरी आइट्रेशन 2, ठीक है। इन हडूप वी हैव मैपर्स एंड इन हाइव वी हैव एग्जीक्यूटर्स। हडूप में हमारे पास मैटर होते हैं और हाइव में भी है एग्जीक्यूटर। स्पार्क में भी हैव एग्जीक्यूटर्स आल्सो। इन हडूप वी हैव मैपर्स while we have executors in hive and spark. Executors in hive and spark. ओके, तो आइट्रेशन होने आइट्रेशन 2 है। अब ये डिस्क पे क्या आता है, हमारे डिस्क पे होता है मेरा इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो फर्स्ट आइट्रेशन से आएगा। इंटरमीडिएट रिजल्ट ये होता है कि हडूप में ना इंटरमीडिएट रिजल्ट भी डिस्क पे राइट होता है, तो हम इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी देख सकते हैं अपने हडूप, ठीक है। हडूप में इंटरमीडिएट रिजल्ट को अगेन एंड अगेन रीड एंड राइट किया जाता है, ठीक है। हडूप प्रोसेस द डेटा इन रैम एंड राइट इट इनटू द डिस्क। ये प्रोसेस करता है यहाँ पे डेटा, रैम इसको बोल रहे हैं हम, मैपर को बोल रहे हैं रैम, एंड राइट इट इनटू द डिस्क। हडूप में इंटरमीडिएट रिजल्ट को अगेन एंड अगेन रीड एंड राइट किया जाता है, ठीक है। इन हडूप वी इन हडूप में इंटरमीडिएट रिजल्ट को अगेन एंड अगेन रीड एंड राइट किया जाता है। इन हडूप वी रीड एंड राइट the intermediate results अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। So in Hadoop we read and write the intermediate results again and again. Read and write the results
intermediate again and again. Now we'll come to Spark. Spark में क्या होता है? Okay, so what happens? Spark is क्या कहते हैं, एक जैसे कि हमारे पास डिस्क है, ठीक है, तो इसमें बताया था मैंने कि इसमें हमारे एग्जीक्यूटर होते हैं, बताया ही था मैंने। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा डिस्क पे डेटा है, आई हैव माई डेटा ऑन डिस्क। तो स्पार्क में क्या होते हैं, मेरे एग्जीक्यूटर्स होते हैं। ठीक है ना? एंड दिस इज द मेमोरी और रैम वी हैव। So like in Spark we have over data, like we have memory as well as RAM for processing। काम भी ले रखा है, बता। Okay, so like Spark जो है वो वापस डिस्क पे नहीं जाता है, एंड इसलिए Spark परफॉर्म करता है Hadoop को। Spark doesn't go back to the like disk again, that's why it's outperform the Hadoop। Okay, so Spark doesn't go हाँ मैम, कोशिश तो यही रहेगी कि मैं संडे को आ जाऊँ, वरना फिर पता नहीं कब back to the disk। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ये भी सही है। देखती ठीक है, मैं आती हूँ संडे को, and 99% में आऊंगी, ठीक है। देख मैं कोई बिल्कुल ही, हाँ देख मैं बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज Spark कभी कभी ऐसा होता है ना कि हालात पर हो जाते हैं, आप सोचते कुछ नहीं होता तो मैं मान आ जाता है Hadoop। हाँ, तो मतलब लेकिन मैं ये सोच रही थी ज्यादा नहीं, लेकिन हाफ डे। But let's say we have 10 GB data only, then Hadoop में फर्स्ट टाइम में ही हो जाएगा प्रोसेस, फर्स्ट आइट्रेशन में। लाइक Hadoop में इस तरीके से होता है ना, तो Hadoop में वो 100 GB का 10 GB का डेटा जो है वो फर्स्ट टाइम में प्रोसेस हो जाएगा, सारे काम निपटा उसे वापस डिस्क पे जाने की नीड ही नहीं होगी। तो इस केस में मोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब बेसिकली अगर डेटा कम होगा तो स्पार्क की परफॉर्मेंस और हार्डवुड की परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। काम नहीं मिलेगा, सारा काम सुबह तक निकल जाता है। ओके, तो ये बात ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हडूप, ठीक है, इस बीच में यदि कोई और और उन्होंने ऐसा सूट आए, सिस्टम बनाया ही क्यों? depend करता व्हाई है। द हडूप हैज बीन मेड, व्हाई द हडूप हैज बीन कोई ऐसे भी सूट आ सकते हैं ना मेड। जिनका अगले संडे तक दे सके। इससे पहले मुझे फॉर एग्जांपल की इस केस ये दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल न्यूट्रल होगी। ठीक है, तो इसमें जस्ट राइट इट, दिखा देते। देखिए यदि भर सके तो अभी जो फ्री है, क्योंकि बंद हो जाती है डेट जल्दी, हो सकता है यहीं से निकलने हो मेरा दिन। But let's say we have 10 GB of data. We have 10 GB of data only. Then Hadoop will process this data, will process the whole data, in first iteration only. In first iteration, so like वापस डिस्क पे जाने की नीड नहीं होती। There is no need to go back to the disk again. There is no need to go back to the disk again. Like, but let's say we have 10 GB of data only, then Hadoop will process the whole data in first iteration only. There is no need to go back to the disk again. So in case there might, so in case the performance is quite similar. So in this type of case, so in such type of cases, the performance is quite similar. So
there is no need to. So in such type of cases, performance is quite similar. The performance is quite similar. Okay. Now the question is Hadoop वाला सिस्टम ऐसा बनाया क्यों? बिकॉज जिस टाइम गूगल वालों ने इसे बनाया था उस टाइम रैम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी एंड उस टाइम गूगल के मल्टी प्रोसेस चल रहे थे, इसलिए वो इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी सेव करके रखना चाहते थे। इस वजह से हडूप सिस्टम ऐसा बनाया गया। ठीक है, वही है ना कि इतनी कमी थी तो इसको बनाया ही क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इसकी की नीड थी, उस टाइम पे रैम की कॉस्ट बहुत हाई थी एंड उस टाइम पे बहुत सारे मल्टी प्रोसेस चल रही है तो वो इंटरमीडिएट रिजल्ट को सेव करना चाहते थे। नाउ द क्वेश्चन इज now the question is why Hadoop has been made? Hadoop बनाया गया, Hadoop वाला सिस्टम ऐसा बनाया गया बिकॉज जिस टाइम गूगल उन्होंने इसे बनाया था, बिकॉज द टाइम व्हेन गूगल has created created Hadoop. First point is because when Hadoop was being created, when Hadoop was being created, then the cost of RAM was so high. क्योंकि उस टाइम पे रैम की कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। एंड सेकेंड पॉइंट इज लाइक due because of the run because of the different multi processes we needed to save the intermediate run. Because of the different multi processes they need to save the intermediate result as well. They need to save the so the presence of different because of different multi need to save the intermediate results as well. Intermediate results as well. ओके, अब मैंने आपको डिफरेंस के पॉइंट्स बताए थे ना, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको परफॉर्मेंस का बताया था। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, हडूप एंड स्पार्क के बीच में ओके something is happening. सेकेंड पॉइंट इज बैच और स्ट्रीमिंग। ये हडूप की टेबल है और ये स्पार्क हडूप का सेक्शन है और ये स्पार्क का। सेकेंड पॉइंट इज बैच या स्ट्रीमिंग क्या है। ठीक है, बैच और स्ट्रीमिंग।
This is built for batch processing only. Hadoop is built for batch processing. While Spark is built for batch as well as streaming data processing, built for batch as well as streaming data processing, that built for batch as well as streaming data processing. Okay. Next point, next the difference is based on ease of use. Which point? Ease of use. It is difficult to write code in Hadoop, while Hive was built to make it easy. It is difficult to write code in Hadoop. It is difficult to write code in Hadoop, while Hive was built to make it easier. Hive was built to make it easier. Hive was built to make it easier. Okay. It is easy to write and debug code. In Spark, it is easy to write. We have interactive shell to develop and test. Spark provides high level and low level API. So it is easy to write and debug code. So in this we have interactive shell to develop and test. So Spark provides high level and low level API. Spark provides high level and low level API. Okay, and the next point is off. Let me just remove this. Let me just remove it first. Okay. Hadoop. Here it is Hadoop. And here it is Spark. Next difference is based on security. This Kubernetes authentication and ACL authorization does not have a solid security feature. Use Kerberos authentication and ACL authorization. ACL authorization. It doesn't have solid security feature. It doesn't have solid security feature. Okay, the number of strokes have been full. So I'm not able to write. Let me just go to another page.
So this is the main difference between यान यूज होता है मेरा, आप ये भी याद रखना बस। कार्बोनॉस ऑथेंटिकेशन में क्या यूज होता है मेरा, यान यूज होता है। कार्बोनॉस ऑथेंटिकेशन में क्या यूज होता है, यान यूज होता है। यान इज यूज्ड इन Kerberos authentication. Okay. And और स्पार्क के केस में HTFS यूज होता है ACL में, एंड यान यूज होता है, यान यूज होता है कार्बोनॉस सर्टिफिकेशन के केस में, HTFS होता है ACL के केस में। ACL ऑथराइजेशन, स्पार्क का तो तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है नहीं। सो दिट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, नाउ विल मीट इन अनदर वीडियो इन अनदर सेशन। Until then, goodbye. Please with the like button, share the videos much as possible. Please do subscribe to my channel. Thanks.